England have the second most valuable squad in world football, but they still can't win trophies. England have produced superstar after superstar. Beckham, Rooney, Gerrard, Lampard, Kane, Bellingham. But एंड में स्टोरी ऑलमोस्ट हमेशा डिसअपॉइंटमेंट पे ख़त्म होती है. एंड ऑनेस्टली आई थिंक आई नो द बिगेस्ट रीज़न वाई. इंग्लैंड हर बार बस बड़े बड़े नेम्स को एक साथ फिट करने की कोशिश करती रहती है इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग एन एक्चुअल सिस्टम. बट दिस टाइम थिंग्स फील डिफरेंट. थॉमस टुकल ने फाइनली एक ऐसी स्कोर सेलेक्ट की है जो बैलेंस लगती है, सिर्फ पॉपुलर नहीं है. एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू एनालाइज इंग्लैंड स्कोर, their best possible lineup, backup options, and whether this team can finally bring football home or not. So, let's get into it. First of all, goalkeeper. गोलकीपर पोजीशन कम्प्लीटली क्लियर है. जॉर्डन पिकफोर्ड स्टार्ट्स, नो डिबेट. बिग टूर्नामेंट में उसने हमेशा इंग्लैंड के लिए कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है एंड ट्यूकल डेफिनेटली उसको ट्रस्ट करेगा इन प्रेशर मोमेंट्स ओवर हेंडरसन एंड जेम्स ट्राफर्ड. Now let's move to the defense. At centre back, England finally have some really solid options. Mark Guehi had another fantastic season, and honestly, he is England's most reliable defender right now, the best they had. Alongside him, I think Ezri Konsa should start. Calm on the ball, defensively strong, and England setup में काफ़ी अच्छे से फिट हो जाता है वो. देन जोन स्टोन्स ऑब्वियसली वर्ल्ड क्लास डिफेंडर है व्हेन फिट, बट इंजरीज अब कंसर्न बनती जा रही है. और डैन मन स्कोर को फिजिकलिटी और एरियल डोमिनेंस देता. सो मार्क गुएही एंड कौनसा विल स्टार्ट. नाउ यस, वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रोवर्सीज वाज हैरी मैग्वायर बीइंग लेफ्ट आउट, बट ऑनेस्टली मुझे लगता है इट वाज द राइट डिसीजन. इंग्लैंड को मोस्ट पॉपुलर नेम्स नहीं चाहिए. दे नीड द प्लेयर्स विच वुड फिट इन टुकल सिस्टम, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट टुकल सीम्स टू बी डूइंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फुल बैक्स. एट राइट बैक, रीस जेम्स शुड स्टार्ट. अगर फिट रहा, ही इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट कंप्लीट फुल बैक्स इन द वर्ल्ड. लेफ्ट साइड पे ओराइली एक काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, एंड आफ्टर हिज ब्रेक थ्रू सीजन विद मैनचेस्टर सिटी he should start on the left side. And then you have players like Livramento and Spence who give England flexibility on both flanks. But असली डिस्कशन मिडफील्ड में स्टार्ट होता है. जॉर्डन एंडरसन की सिलेक्शन पे काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई because many fans wanted younger players instead. Or honestly, Adam Wharton was a great backup option after showing flashes of quality for Crystal Palace. But if you know Tuchel, this Henderson decision actually makes sense. Every successful tournament team needs experience and leadership. Henderson may not start every game, but dressing room presence और mentality के लिए Tuchel clearly उसको important मानता है. Now in the double pivot, Declan Rice is guaranteed to start. One of the best midfielders in world football right now. और उसके alongside, I would actually go with Elliot Anderson. Because he brings energy, pressing, balance, he can win the ball in midfield, he can do everything. Of them, there is no question, it's Jude Bellingham. Honestly, England without Bellingham feels completely different. बंदा हर टूर्नामेंट और बिग गेम में इम्पैक्ट डालता है. इंटेंसिटी, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप सब कुछ है उसके गेम में डिस्पाइट हिज एज. एंड दिस सिस्टम कुड फाइनली अनलॉक हिज बेस्ट वर्जन. Morgan Rogers will also be a very important player. Left wing cam, he can play at both. बेंच से गेम completely चेंज करने की एबिलिटी भी रखता है. Now let's move to the attack. On left wing, I would personally start Anthony Gordon. Maybe थोड़ा controversial हो, but his pace, pressing and direct running, it's really good for these type of tournaments. But Marcus Rashford is also a very strong backup option. After a decent season with Barcelona, we all know when he is confident, he can completely destroy defensive line.
We have seen it against Newcastle this season as well. And on the right side, Bukayo Saka will start every game for England. There is no debate on this. And now he has also won the PL, so he's better than Messi officially. Now, yes, many fans will ask about Foden and Palmer, but international football isn't about the big names. It's about balance, chemistry and structure. और कभी कभी बड़े names simply एक साथ fit नहीं होते. And honestly, that's been England's biggest problem for years. Finally, at striker, there is only one answer: Harry Kane. England's captain, England's leader, or maybe the final piece Tuchel needs to build a winning team with Ole Watkins and Ivan Toney as backup. England suddenly have insane depth in attack, and honestly, this might finally be the most balanced England team we have seen in years. Not because they have the biggest stars, but because they have finally have a manager building an actual football system. And that's why I genuinely believe England can win the World Cup under Thomas Tuchel. Because if there's one thing Tuchel knows, it's how to win tournament. So yeah guys, that was my analysis of the England score. And now I wanna know your opinion as well. What would be the starting 11 for England? And do you think they can win the World Cup? Also tell me which squad analysis you guys wanna see next: Brazil, Netherlands or Japan. If you enjoy the video, make sure to like, subscribe and support the channel. Thank you. That's my time. See you on the next one.